Hey guys, welcome back to my channel, The Pristine Nook. Today's video is about the guest room makeover. It dates back in time a little. मैंने कुछ महीनों पहले ये वीडियो करा था जब मेरी मम्मी हमारे साथ आके रहने वाली थी, and I had great fun doing this video, shooting this video, as well as just decorating the room for her and everything, getting it ready. So I hope you do too. Please do not forget to like, share, and subscribe to my channel. Also make sure you comment down below and let me know any other videos that you might want to watch from this channel. Thank you and enjoy watching. तो दिस इज़ द बिफोर शॉट ऑफ द रूम. यहाँ पे सिर्फ एक बेड है और साइड में कर्टन्स नहीं थे, जो कि बाद में मैं लगाऊंगी. ये जो ब्लाइंड्स है वो मैं निकालूंगी और आई विल ऐड कर्टन्स टू इट. और बस बेसिकली इट वाज जस्ट वेरी बेसिक लुकिंग. So this makeover includes painting the room. मैंने इसमें एक और दो walls actually, so one side, one half of the room paint किया है और उसके साथ साथ फिर उसके बाद decorate किया उसको. तो basically I've changed the entire face of the room. तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इस कमरे को पहले I'm prepping the walls. मैं walls को साफ़ कर रही हूँ पहले, तो दीवारों को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ. उसके बाद मैं इसको पेंट के लिए I'm just basically getting it ready for the paint. And अगर आपको एक डिटेल वीडियो देखना है of me painting और कैसे किया जाता है, then please comment down below और मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो ले आऊँगी. Painting on the sides, but I've still got a long way to go, so I've got to paint all the sides and the corners of the sides and then paint the actual wall. So let's continue.
और अब आता है सबसे एक्साइटिंग, सबसे मज़ेदार पार्ट, which is the decorating part. I absolutely enjoyed this so much. ये ब्लैंकेट मैं इसी के लिए लाई थी, बट मुझे लगा कि ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, तो मैंने इसको यूज़ नहीं किया। आई होप यू गाइज हैव एन्जॉयड दिस वीडियो। मुझे ये शूट करते हुए बहुत मज़ा आया था, तो आई होप यू गाइज हैव एन्जॉयड वॉचिंग इट। प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट with your friends and family. Subscribe to my channel, The Pristine Nook. Until the next time, see you. Bye bye.